Whenever moon is conjunct with Saturn, Rahu, Ketu, it becomes difficult because these are the planets which are karmic, which brings the fated events in our life. We or feel helpless. We often look at our birth chart, or as many would call astrological chart, to look for answers to questions like when am I going to get my next job, or when am I going to get married, or when a good time's going to arrive. But today we're going to delve into the emotional landscapes that are created by the planet Moon, especially when they're joined by Rahu, Ketu, Saturn, the grand malefics. Um, Today, I have with me Nipun Joshi. He's a palmist and a very renowned astrologer. So, welcome to the show, Nipun. Thanks a lot. Namaskar, Rishanka. Namaste. And yeah, I feel very honored talking to someone who also is equally interested and curious in astrology. Definitely. So, let's begin. All Yeah. right. So, I want to begin with Moon. Moon being the mother, the feminine energy, the mind, which is, I feel, Beyond any doubt, you got it very right. Moon tells about your relationship with your mother. It describes your personality, your habits, your characters, everything we see from the moon. But straight away, rather than diving straight to the moon's conjunction, moon is such a important pillar of analysis that we have to do a comprehensive analysis of that. I cannot just straight away talk about that moon is conjunct with Saturn. First comes the question, what kind of moon we are talking about? Is this a new moon? Is this a full moon? Or how much is the Pakshbal moon has got? In which tithi you are born? Like when we talk about the Panchang, the five verticals of the moon, when you do the decoding of that, it gives you a comprehensive information regarding someone's thought process, the kind of the prarabdh, the karmas with which that person is born. So when you are doing the decoding or analysis of the moon, first see the dignity or strength of the moon because you perceive the whole life, whole world with that moon. So once you have done the proper analysis from the Panchang that this is a moon which has got good Pakshbal in terms of the Tithi, then it is not of a Gandant nakshatra. It is like a very favorable nakshatra. Like we say, Rohini is one of the best nakshatra. Pushya is one of the best nakshatra. Like Uttarashadha is one of the good nakshatra. Then we will come down to the Yog, Karan. If we get a formation from everywhere, so we come to this conclusion that it is a very like fertile, very healthy, very happy moon. Now start placing the conjunction over here. The question which you asked. So see, beyond any doubt, whenever like moon is conjunct with the so-called villains of astrology, which is Saturn, Rahu, Ketu, it becomes difficult because these are the planets which are karmic, which brings the fated events in our life. We or feel helpless. For example, if your moon is conjunct with Saturn, so definitely all the attributes of the Venus will go through difficulties. Like this person will be very prone to getting tired easily, stressed easily, feeling very dried up regarding his emotions. You have a mother who is like very strict, who is very bossy, or like there might be concerns of the health to the mother as well. Now let's place Rahu and Ketu. Now it becomes much more complicated over here because it will not give someone a wholesome personality. There will be some flaw which is going to be there. So when we talk about Saturn, Moon, I have seen these people that their first half of the life is filled with a lot of the problems, stress, health concern, betrayals, struggle. But in the second half of the life, a lot of the Moon and Saturn conjunct people have been found to be very good doctors, very good healers, some of the biggest philanthropists and humanitarians which the world has seen. But when we talk about Moon and Rahu, if Moon is already afflicted and over and above that, if Rahu is conjunct with it, Rahu is influencing it, so Rahu has this tendency to corrupt someone's character. The person might be very secretive, person might have hidden agenda, propaganda. This person, you cannot trust this person very easily. So all these are the negative side of the Rahu. The person might have addictive tendencies as well, obsession towards something at the cost of all other areas of the life, obsessive regarding one specific area of the life. So this is what happens in the modern day and age. Rahu can give you fame, wealth, but are these people who are actually rich, wealthy, famous, are they actually really happy? On and off, we keep on coming across someone very famous TikToker. His life was so lonely, isolated, he overdosed or he committed suicide. Same is the case with the wealthy people, they have their own set of problems. So, this is what when Rahu influences the moon. Now, Ketu is different because Ketu is not connected with this world. So, if someone is born with moon Ketu combination, right?
And let's say, for example, this moon is of the Purnima, of the full moon. The chart has got a strong Jupiter, and the childhood houses are generally the second house and the fourth house. This What combination if of moon, Moon and Ketu is in the fourth house? if I were to just say about Moon Ketu, because somehow Moon has got that familiarity, that affinity with the fourth house. Because in the original Kalpurush Kundli, fourth house belongs to the Moon. So if Moon Ketu is there, the emotions and sense and feeling of detachment, spirituality, meditation, being able to connect with the astral world, higher realms, being able to absorb all that divine knowledge. So that capacity is going to be strong. And these people can be very good artists, very good medium, they can do very good channeling, they can be very good doctor, medicine man, healer, occultist. So let's get back to mother, like relationship with mother. Do Okay. these three combinations ruin the relationship with the mother? No, see, again, Rishanka, see, ruin is a very kind of a subjective or one-sided approach of looking at it. So But for it will example, be harder than what somebody with just moon alone, sitting alone would be. see, the thing is, if we have to talk about the relationship with the mother, we have to also give attention to what is happening in the fourth house, what is the dignity, strength of the fourth lord. When Moon is conjunct with Saturn, there is going to be like hard work, difficulty, pressure, nursing. All these qualities will come. All these situation will happen. Out of the Moon Saturn, Moon Rahu, Moon Ketu, I would say the most complicated and Moon Rahu. problematic might be Moon and Rahu. But Rahu, Moon yeah. Saturn and Moon Ketu is not that complicated. And see, these could be those people who, like in their old age, or like, not in their old age, right? When their parents are of that old age, this is going to be the kid who is going to be around his parents, who's going to be around the mother. The Rahu moon one. See, with Rahu Moon, again, with Rahu, is like, see, I don't want to Scare quote it anyone. like this. Yeah. Rahu is Yeah. like selfish. Rahu always cares for his own wish. There is a lot of illusion. And with Rahu, there is a lot of the materialism, selfish, your self-will and desires comes into the picture. But Moon and Saturn and Moon and Ketu, these are the true empathizer who actually empathize with you, feel your pain. And I would not say that it is a kind of a thing that it is definitely going to give a difficult relationship with the mother. Like rather, I would say that when the parents will be old and will be needing that support, nursing, someone who has got Moon Saturn in the chart, that child is going to be there around his mother. So, all right. So that's great information. And I want to continue on the mother part. Does this energy of difficulty with the females also bleed into other relationships that are feminine, like, say, your sisters, female bosses, even, say, a man's relationship with his wife? No, Rishanka, for example, what is the strength and dignity of Venus in the chart? When we talk about, for example, your sister, your like other aunts and cousins and all, then Mercury plays a very significant role. Significant So role. that's how we have to see. And see, some of the charts, like you will find some of the people who are very pure archetype, like someone like from the numerology, born on a sixth. Moon Nakshatra is also Puru. Ascendant is Taurus, and the ascendant Lord is in the Libra. So then we get to know that this is a pure archetype person, and then that planet will be giving you pure information because this person is so purely defined by Venus, and Venus is in this dignity. So that means your relationship with those people can be decoded like this. But just from Moon's conjunction with Saturn, Rahu, Ketu, we cannot just package it in a generalized way that your relationship with all the females, your cousins, your sister is going to be like that. No, that makes sense because from what I've studied, Mercury plays a big part in relationship with sister, and Yes, yeah, definitely. so you kind of need to see the dignity of that as And well. Shankar, that's how we even judge the strength of the planet. For example, if someone comes to me and that person is in the Mercury Dasha, I need to first see, okay, how Mercury is working. Hey, how's your relationship with your like with your Sister. co-workers, with your sister? If it is Venus, your wife. If it is Saturn, your paternal uncles. If someone comes to you and that person says, oh, I'm having some ancestral property, I cannot stand my paternal uncle, my chacha, and I have a lot of issues with them. Like it somehow gives this indication कि शनि खराब होगा, शनि प्रॉब्लम दे रहा होगा, क्योंकि शनि के जितने भी all the significating qualities of the Saturn is giving problem to that person. So that's how we like connect the dots, Rishanka. Got it. All right, let's move to the mystical side of these planets, specifically Rahu and Ketu. Okay, we all know that these are
planets that eclipse the moon. These are planets that are shadowy planets. Especially talking about Rahu here, there is a saying, and I know it's written in scriptures as well, that there are some powers associated with Rahu relating to ghosts and black magic or, some psychic abilities. So a person, for example, has Rahu moon conjunction. They could be into addictions, they could be doing a lot of bad things, but then they hit rock bottom, they come out of that and suddenly gets enlightened or get on a spiritual path, and then they discover these powers in them that I am very intuitive or I have psychic abilities. What is your opinion on this? Is this true? Is this false? What is the truth behind this? As rightly said by you, see, that's the reason I love interacting with people who have some basic knowledge, and like you have got advanced level knowledge, rather, I would say. See, when we talk about Moon and Rahu, you got it very right that yes, there are those concerns where a person can be prone towards addiction, gambling, these kind of illusion, confused all the time, confused and all. See, but in the modern day and age, when we talk about people who get into futuristic thing, like all those people, there's this girl, I recently did a reading for her and she was in the Rahu period. I asked her like, okay, so what do you do as a profession? I work with rockets. Like what? So yeah, so something connected with the space. So again, so what you said about the ghost, so that comes in the category of the Pitra dosha. When a chart is indicating something like this, you get the indication from multiple direction. Now let me first answer that. When you say the ghost kind of entity influence, that generally happens when this person might have a birth around the either Ashtami, around the new moon. Moon Rahu might be conjunct in the 8th house, in the 12th house, or Saturn or Ketu might be giving its aspect over there as well. So then you see that you are getting the indication from multiple direction. So this is a case where we say that okay, some sort of Pitra dosha, some sort of affliction, and these are the destinies which are like forbidden, which are blocked. बंधक कुंडली we call this term. करो और शांत रहो, ठंडे रहो, ज्यादा हाथ पैर मारोगे तो उल्टा और जमीन में दलदल में घसोगे धसोगे। तो मच बेटर है कि ये कुंडलियां, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हैं, पीपल हु आर लाइक स्पेस एक्स, पीपल हु आर लाइक इन ऑल दीज काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक कंपनीज, ये सारे मून राहु वाले हैं। तो मून राहु का जब बात होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऋषांका कि जो हम लोग ये टर्म घोस्ट और जो हम पितृ दोष ये सब पीड़ा की बात करते हैं, ये सारा स्टार्ट होता है पंचांग से। क्योंकि अगर इफ यू विल जस्ट ओनली लुक एट द मून एंड द ज़ोडिक साइन एंड द हाउस, ठीक है, इट विल गिव यू दैट ओवरव्यू बॉल पार्क आइडिया अबाउट कि ये इंसान इस फील्ड में जा सकता है, इसकी टेंडेंसी हो सकती है। पर जो कर्मा आता है, जो आपके एंसेस्ट्री में, आपके लीनिएज में, आपके डीएनए में आ रहा है कि बंदा इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन सरफेस, यार तेरा काम हो क्यों नहीं रहा, तू फंसा कहाँ पे है, दिक्कत क्या है, ऐसी क्या चीज गलती हो गई कि तू तो डॉक्टर है और तेरा रोमांस हो गया किसी स्कूल ड्रॉप आउट के साथ, तेरा मैरिज हो गया, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ये सारा राहु का प्रॉब्लम, ये सारी डेस्टिनी But फोर्स्ड प्रॉब्लम्स। बट ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, राहु मून, केतु मून, सैटर्न मून, ये क्या इसीलिए किसी के चार्ट में आती हैं कि देयर इज पितृ दोष और देयर इज अ कर्स और देयर इज समथिंग? लाइक दैट, जब तक चंद्र इन्वॉल्व नहीं होगा, अगेन के साथ अगर सैटर्न केतु राहु का है, पंचांग में दोष है, अमावस की तिथि है, अष्टम भाव है, 12th हाउस है, देन एवरीथिंग इज एडिंग अप एंड इंडिकेटिंग दैट। Otherwise, answering your question individually, Rahu Moon person can be a scientist, can be a tech entrepreneur, and can have like a cannabis business, can start from a scratch and build a big empire. Let's say, for example, guys, if you have like Moon Saturn, in any way Saturn is afflicting your moon. If your chart allows, you can wear a sapphire, blue sapphire, but only after getting your chart assessed by a professional astrologer. Thing is that if there is any concern coming in from the Saturn, so voluntary work, service becomes very important. Saturn is a planet which gives you result like anything, but only if you are humble, you are very polite, you are unconditionally ready to serve. And the reputation of Saturn is Saturn can delay, Saturn never denies. I'm telling you, people who are in the top of the field, top of the game, all Saturn. The extent to which Saturn can give you, no other planet can give. Donating mustard oil, donating the shoes to the needy people, people who are helpless. See, people who cannot take care of themselves, they are dependent on the mercy or they are dependent on the society. These are the people you have to cater to, you have to help unconditionally. Saturn will be very happy with you. Moon Rahu, for Rahu we say that goddess Durga and goddess Saraswati, because Rahu
eclipses your mind, your judgment. It makes everything very cloudy. So goddess Saraswati, which is the goddess of the knowledge, of the wisdom. So worshipping goddess Saraswati and the बीज मंत्रा, उसके अलावा सिल्वर, आपकी बॉडी में कुछ सिल्वर होना चाहिए. इंडिया में, इफ यू लिव इन इंडिया, द स्वीपर्स, यू कैन गिव देम चाय पत्ती और कैन डोनेट द ब्लैंकेट्स. ये टिपिकल लाल किताब के उपाय हैं. तो राहु के लिए आप ये सब चीजें कर सकते I've हैं. also heard one upay that Rahu moon या राहु की दशा में clean toilets yourself. वो देखो, हाँ, वो उसका सेंस बनता है कि वो घर के वास्तु में भी राहु को कहीं ना कहीं उसके साथ जोड़ के देखा जाता है. और जब आपका केतु लॉर्ड गणेश, एंड इफ इन एनी कैपेसिटी आपको कोई डॉग शेल्टर होम है, वहां पे आपको डोनेट कर सकते हो. जैसे भारत में भगवान गणेश के बीज मंत्र, गणेश मंत्र, गणेश मंदिर में जाके मोदक, लड्डू, ये सारे प्लैनेट, वेदर इट्स सैटर्न, वेदर इट्स राहु, वेदर इट्स केतु, ऑल दीज आर द प्लैनेट्स ऑफ डेस्टिनी. सो दैट मीन्स इनको प्लीज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चैरिटी डोनेशन करना पड़ेगा. Give back. और या आपको कुछ ना कुछ अनकंडीशनल. We did remedies for these 3 combinations. So thank you for that. I want to know about Ketu moon and then I'll jump back to Pitradosh. It is said that people who are born with Ketu moon combination are spiritually aligned. Some may even call them saints. Okay, that if not in childhood, but eventually they become beings of the outer world, or they know way more than what normal human beings know. What is your opinion on that? See, Rishanka, इसमें मून केतु कॉम्बिनेशन, अमावस, whenever the full moon is coming, whenever there's a time of the eclipse, I see people, I don't want to generalize it, but जैसे थोड़ा गर्ल्स को थोड़ा ज्यादा थोड़ा एंजाइटी होना, थोड़ा घबराहट. मून केतु मतलब इट्स लाइक वेरी नेचुरलिस्टिक, and your interest is more aligned with nature, herbal and organic things and devotion, meditation. See, moon केतु के साथ कंसर्न क्या है कि आपको वर्ल्डली थिंग्स में फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी. ये ऐसा बंदा होगा जैसे गौतम बुद्ध की तरह या राजा जनक की तरह, कि So उसके there पास is राज spiritual संपत्ति. enlightenment, हाँ, that means. मतलब That's, सब I think संपत्ति होगी. that is the question, that like, do these people feel spiritually enlightened? Are they able to talk Again, about no, the no, occult Shaka, world? that see, being spiritually aligned is the solution and remedy for them. देखो, अगेन, ऐसा नहीं कि मून केतु है तो वो है ही ऐसा. वो जब तक ये बनेगा नहीं ऐसा, उसको फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी, वो परेशान भटकता रहेगा. फिर मून केतु के साथ उसको वर्ल्डली चीजों में फुलफिलमेंट कभी, अगर इस दिशा में काम करेगा तो और किसी इंसान से ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा, बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएगा. Now I want to go back to Pitradosh. You very briefly mentioned Pitradosh and it came up in the topic of these 3 combinations कि जिन लोगों के ये 3, most likely, not always, Pitradosh is the cause. In very few words, if you could just explain what is Pitradosh, ये क्यों होता है, और इसको मैंने सुना है कि पितृदोष की पूजा कराओ सब ठीक हो जाएगा, but it's hard for me to believe that one puja can resolve all your problems. तो जनरली पितृदोष का मतलब ये होता है कि आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं है, यू डिड नॉट टेक केयर ऑफ देम, और दे लाइक some sins committed by you, in like there's very hard and very strong karma with which you are born, which needs to be exhausted. With और these इनके साथ क्या होता combinations. है, हाँ, और इनके टेल साइंस क्या होते हैं. अब देखो, मतलब इनके वंश वृद्धि में दिक्कत होती है कि यू विल फाइंड पीपल हु आर नॉट ईदर एबल टू गेट मैरिड, और इवन इफ दे गॉट मैरिड दे डोंट हैव किड्स एंड दे वांट दैट. अगेन, अगर आप किसी चीज को मानते हो, पूरा मान लो. हमारे अध्यात्म में माना जाता है कि आपके अलग अलग किस्म के डेट, आपको पितरों का ऋण चुकाना है, आपको देव ऋण चुकाना है, और उसके लिए आपको एक संतान होनी चाहिए जो आपके जाने के बाद आपका श्राद्ध कर्म, आपके सारे कर्म करती है. तो संतान का हमारा इसलिए ये लॉजिक इसलिए माना जाता है कि जब संतान होती है तब आपको भी गति मिले, आपको उस देवलोक में, आपके पितृलोक में आपको गति मिले कि आपके बाद आप करने के लिए यू हैव अ चाइल्ड हु डू दैट ऑन योर बिहाफ. ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी वंश आगे बढ़ेगा, मेरी गति के लिए भी मेरे लिए कोई संतान होनी चाहिए जो मेरा कर्ज चुकाए. दैट इज अ ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल लॉजिक. अगर आप मान रहे हो तो उसको आप पूरा मानो, आप कोई भी चीज आधा नहीं मान सकते. तो पितृदोष में यही चीजें होती हैं, इसके जो संकेत होते हैं, जैसे लंबे समय से जीवन, मैंने ऐसे केस भी देखे हैं फ्रॉम इंडिया, लाइक यू नो वे, लाइक 4 बहनें हैं, चारों की शादी नहीं हुई, या घर में 3 लड़के हैं, तीनों का किसी का ही काम नहीं जमा, या बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं, सॉरी मिसकैरेज हो रहे हैं, बाबा मिसकैरेज हो रहे हैं. तो इस तरीके की जो समस्या आती है जहाँ पे वंश वृद्धि नहीं हो रही, व्यापार नहीं बढ़ रहा,
घर में संकट, आपके बार बार कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, और इस तरीके के कॉज, और खासकर प्राकृतिक कॉज भी इसमें काफी, मतलब कहते हैं प्रकृति आपके अगेंस्ट है। इमेजिन आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट करा, वहां पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, आपने कोई ऐसी चीज पे ही बिजनेस स्टार्ट करा, गवर्नमेंट की नई रेगुलेशन आई, उसका लाइसेंस ही कैंसिल हो गया। तो इस तरीके की, लाइक वेर यू आर अ विक्टिम काइंड ऑफ थिंग। इसको ये टिपिकल साइंस होते हैं पितृदोष के। इन लोगों को हवा जल्दी लगती है, इन लोगों को नजर जल्दी लगती है। So मैंने ऐसे भी nazar is real. ओ या डेफिनेटली, व्हाट आर यू सेइंग, दैट डेफिनेटली इज देयर। इविल आई तो होता ही होता है, तो बोलते हैं काफी कॉम्बिनेशंस में कि भाई आप जब तक आपका प्लान पूरा ना हो जाए, लोगों को मत बताओ, चीजें क्या रिवील। combinations हैं evil eye के लिए? It's everything is moon. Moon is like your immunity. Moon is like your strength, robustness. मून अगर पीड़ित है, जैसे बेचारा अमावस का मून है, उस पे सैटर्न भी कंजंक्ट है, फॉर एग्जाम्पल लगना, आपने कुछ करा, दिस पर्सन वाज रॉन्गली इम्प्रिजन्ड एंड ही गॉट फ्री आफ्टर 20 years फाइटिंग फॉर दैट। अब आप जितना मर्जी आपको गवर्नमेंट कंपनसेशन दे दे, सब दे दें, आपका जवानी जो आप कितनी चीजों के लिए यूज कर सकते थे वो वेस्ट हो गया। तो ये जनरली टेल साइंस होते हैं। पितृदोष का एक ही उपाय है, भगवान शिव। भाई एक बात मैं सभी के लिए बोल देता हूँ, मून पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कार्मिक कोई भी प्रॉब्लम हो, हम कहते हैं भगवान विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान जी के उपाय हैं, वो समृद्धि देते हैं। भगवान गणेश संकटों को हरते हैं, लेकिन शिव है जो आपके कर्मा, जो आपके जो प्रारब्ध वर्ष जो कर्मा है, जो लिखा भाग्य का बदल सकता है, शिव ही बदल सकता है। महामृत्युंजय पाठ में बहुत शक्ति है। शिव रुद्रम पाठ आप सुनो, आप अमावस पे दान करो। ये देखो, ये सी ऋषांका, द कंसर्न Amavas राइट is नाउ, what, full moon night? नो नो, अमावस इज न्यू मून डियर, न्यू New moon. मून। So, okay, before we end, I have one or two more questions. One is this degree debate. कि अगर दो ये शनि मून राहु मून अगर 20 degrees apart है तो फिर it doesn't matter. But if they are closer than 20 degrees, then the conjunction gets bad. Is this true? यस ऑब्वियसली ऋषांका, ये तो मतलब कि द मोर द प्लैनेट्स आर टाइटली कंजंक्ट, तो उनका इम्पैक्ट उतना ज्यादा होता है। So is 20 the sweet spot? Is that the right number? देखो उसमें मतलब देखो, जितना टाइट होता जाएगा 20 तक, तो हाँ 20 तक उसका ये है कि देखो 20 तक हम ये बोल सकते हैं कि वो उसकी रेंज में है, वो उसके इन्फ्लुएंस में है। उसके बाद 10 पे पहुंच गया। अब देखो होता क्या है कि अगर सपोज करो विद इन 5 डिग्री अगर कंजंक्ट है, इसके बाद फिर ये भी संभावनाएं बढ़ जाती है कि मैक्सिमम डिविजनल चार्ट में भी आपको साथ मिलेंगे। तो मतलब सपोज करो इसका मून सैटर्न कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल 2 डिग्री पे कंजंक्ट है, आपको इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि जब आप और डिविजनल चार्ट कैलकुलेट जब करोगे, हम D9 चार्ट, D10 चार्ट, वहां पे भी आपको एक साथ मिलेंगे। तो मतलब क्या वो हर एरिया में मार ही रहा है ग्रह। और सैटर्न, देखो अगेन एवरीथिंग ऋषांका कम्स डाउन टू, देखो एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज खराब नहीं है। हमारा काम एज एन एस्ट्रोलॉजर लोगों को पॉजिटिविटी और उस स्थिति को कैसे बेस्ट कैपिटलाइज करें। सैटर्न वाले कॉम्बिनेशन वाले सम ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, द बेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन पीपल। आप इसके अलावा आपको जो मून राहु वाले, जो रॉकेट बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक, मून केतु वाले, तो इस उनको वर्ल्डली चीजें, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो, मतलब मैंने देखा है, जो सम ऑफ द वाइट पीपल हु गो टू ईस्ट फॉर दैट फाइंडिंग दैट पीस एंड ऑल, वो छोटे छोटे आश्रम में, धर्मशालाओं में, बिल्कुल छोटी छोटी बसों। सो मून केतु इज लाइक वेरी हम्बल, connected to the roots. Rahu, let's talk a little bit last about Rahu Yeah, moon. yeah, yeah. Rahu moon sometimes gives a lot of fame, right? Oh, yes, yes. When we talk about the material realm, Rahu Moon could be a very good combination. There is no debate to that. But whatever you are getting, deep inside, are you fulfilled? How is your character building? आपका कैरेक्टर, तो राहु मून का मतलब ये होता है कि लाइफ थोड़ी ऑब्सेसिव हो जाती है। लाइफ के एक एरिया में बिल्कुल कहते हैं ना कि एक एड्रेनलिन रश, हाई टेस्टोस्टेरोन होता है, और बाकी एरिया फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो ये थोड़ी संभावना। बट ये जो सारे एक्टर्स सेलिब्रिटीज ये सब होते हैं उनके मोस्ट प्रोबेबली राहु मून देखो होगा, लेकिन अब देखो ना, जैसे हम बात करते हैं जैसे अमिताभ बच्चन जी की, जो हम्म। लेजेंड है, जो आज 90-80 साल में भी ही इज वर्किंग सो हार्ड, एक अपनी उन्हें इमेज बनाई है, उनको रिस्पेक्ट की तरह देखा जाता है। वो शनि एंड ही राहु हैज वाले शनि तो, नेत। हाँ वो शनि, पूरी पूरी कुंडली उनकी शनि है। और अरे उनको तो एस्ट्रोलॉजी भी बहुत आती है, उनको तो एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छी आती है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो ये शनि वाले होते हैं। फिर अब राहु वाले तो वही कि आए गए, स्कैंडल में फंस गए, लाइफ अंदर से शैलो है, और अपनी देखो होता क्या, लेगेसी की बात है, कोई लेगेसी नहीं बिल्ड करी, और जो पैसा फेम कमाई थी वो भी बहुत टेम्पररी रही। और मतलब इस तरीके से तो राहु वाली जो फेम है उसकी उतनी वर्थ नहीं रह गई है जितनी अभी भी सैटर्न आ गया है। तो सैटर्न पहले भी किंग था, आज भी किंग है,
और हमेशा सैटर्न ही किंग रहेगा। एक एम्पायर जो बनता है वो सैटर्न से ही बनता है। समाज में रिस्पेक्ट जो आपको मिलती है शनि से मिलती है। तो But you राहु know के बस। what? I'm going to disagree with you a little bit on this. I have personally in my life seen people who've had Rahu Moon in eighth house have been in the dumps, hit rock bottom, come out of that, and this is later in life. I'm saying 35, 40, 45, and have suddenly become very spiritual, given up addictions, given up all the wrong things, have become spiritual and are on the righteous path now, more towards the Shani type of personality. So that's possible too. And I think that comes back to That's Rahu what I'm saying, Ketu Isha. हाँ being हाँ, see that's possible, but again देखो, आप ये देखो ना कि what the ordeal and the fire which this person has gone through। और देखो होता क्या है कि जब मून राहु का इन्फ्लुएंस होता है ना, हमारे शास्त्रों ने हमेशा एक चंडाल का ही दर्जा दिया था। मतलब है कि राहु एक ऐसा एक डीमन है विच नेवर गेट सेटिस्फाइड। तो जहां पे भी आप हो, देखो अल्टीमेटली जहां पे भी हो, आप संतुष्ट कितना हो, सुखी कितने हो, और स्टेबल कितने हो, स्थिर कितने हो जीवन में। अगर ठीक है आपने दुनिया भर का आपने संपत्ति भी, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है। so it is possible that they end up in a good place as well. ओ यस इस नो देखो अल्टीमेटली इनर इमोशनल फुलफिलमेंट दैट्स व्हाट मैटर्स। जैसे कहते हैं ना कि मून सैटर्न लेके आपने जीवन के सारे दुख संघर्ष आपने उनको झेला, और बहुत बड़े आपको जज बुकले कुछ बड़े आपने अनाथालय और विधवाश्रम क्या क्या बनवा दिए। तो ये था मून सैटर्न में आपने यू बिकेम अ लाइक अ रोल मॉडल। तो मून राहु के साथ है कि आपने मतलब आफ्टर डीलिंग विद ऑल द इनर डीमंस, ऑल द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ऑल दोज एडिक्शन टेंडेंसीज, इफ यू ग्रू अप, यू आर स्टेबल, यू आर कंटेंटेड, आप अध्यात्म पे हो, तो ये तो विन विन सिचुएशन है। इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, So but that there's is possible. It's possible with every combination. It's possible with human will, with the human will and with the divine grace. It is possible with all the combination. आपका उस इंसान का जिसका मून राहु अष्टम भाव में है, हो सकता है उसका नवम भाव मजबूत हो सकता है उसका बृहस्पति अच्छा हो सकता है बृहस्पति की दशा आ जाए तो उसको अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छा गुरु I मून feel राहु के। free will is there to play a big part in this Yes, whole. yes, free will and the blessing, kripa, blessing. All right. So to end things, Nipon, I have one very interesting question for you. If you were to, and I don't know if you already have it, but if you were to pick one of these combinations for your own chart or for your one of your family members' chart, which one would you pick? Obviously, looking at it from a more positive point of view. तो मेरी इन माय चार्ट आई एम एरीज लगना, राहु इन द फर्स्ट हाउस टाइटली राइट ओवर माय ascendant डिग्री इन द अश्विनी नक्षत्र। आई हैव केतु इन द सेवेंथ हाउस एंड केतु इन द राहु's नक्षत्र इन द स्वाति। My moon nakshatra is Sadbhisha, Rahu's nakshatra. All the planet are in the excess of Rahu and Ketu. Because obviously if I am born with the Sadbhisha nakshatra, तो बचपन में जो मेरी दशा थी वो राहु से स्टार्ट हुई थी। मुझे आज भी याद है लाइक इवन व्हेन आई यूज्ड टू गो टू कैंटीन, राहु किस में स्वेलिंग हो जाती है, कुछ भी खाया एकदम से स्वेलिंग हो गई। There was a time when I was in depression, suicidal thoughts, suicidal tendency. I dealt with all of that. और जितना मैं सोशल मीडिया में रिकॉग्निशन मिला, एस्ट्रोलॉजी में मिला, सब राहु। So I have lived with Rahu. If you were to ask me in the next life, do I want to have that again? तो मैं तो कहूंगा कि नहीं। अगर आप मुझसे बात करते हो, मैं केतु भी नहीं कहूंगा। पहले तो अपने लिए बात कहूँ तो, क्योंकि केतु बहुत घबराहट करता है, एंजाइटी करता है। जब तक वो एनलाइटनमेंट नहीं आ जाती, वो उस लेवल का एजुकेशन इवोल्यूशन नहीं हो जाता। शनि ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत जल्दी मैच्योर कर देता है, बहुत जल्दी जिम्मेदार बना देता है, समाज में सम्मान दिलाता है। अगर आज भी आप मुझसे पूछते हो ऋषांका, इफ आई हैव थ्री पाथ्स of next life for myself, or even for if I need to select it for my family or someone, one path is going towards moon is getting aligned with Rahu, moon is getting aligned with Ketu, and moon is with the Saturn. Always I'll go with Saturn. Fantastic. I would pick that too. No, Saturn again what is You know, what if a moon is exalted? I'm not talking about these combinations. I'm talking about just if your moon is exalted in your chart. yeah, Do देखो you have the ability to manifest way more than somebody who does not have an exalted moon? देखो मून अगर देखो देखो मैनिफेस्टेशन पे दो तीन चीजें होती हैं। मैनिफेस्टेशन पे आपका नाइन्थ हाउस का भी रोल आता है, आपके जुपिटर का भी रोल आता है। तो जैसा कि अब अगर आपने कहा अगर आपका एग्जॉल्टेड मून है, उस पे जुपिटर का भी प्रभाव है, जुपिटर की कंजंक्शन है, तब ये विन विन कॉम्बिनेशन हो जाता है। और देखो जितने भी क्वांटम साइंस वाले, दीपक चोपड़ा का भी जो क्वांटम पे उनकी जो बुक है, वो ये कहते हैं कि आप कॉन्शियस अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओशो भी यही कहते हैं, आप जो कर रहे हो उसी को मेडिटेशन। Wow. Nipon, this was so good.
I have learned so much and I've thoroughly enjoyed this podcast, mostly because it's a topic that I'm so interested in and I love learning about. Thank you so much for all this like amazing knowledge you've shared with me today. Thanks a lot for this opportunity. I feel very grateful to talk to someone who is equally passionate, invested in it, who has like very relevant question, well researched question. Fantastic. For all the listeners, if you enjoyed this podcast and are into astrology, need some more answers, please don't forget to like, subscribe, and share. Listen to the podcast, hear about the remedies, and please put in your comments in the section below and let me know if there's any other kind of podcast that you would like to listen to. Until then, this is Rishanka Jones signing off.